एक्सटेंशन, क्योंकि वो आपके आदरणीय अध्यक्ष जी 370 पेज का नाम इन्होंने लिया था शीला जी के खिलाफ। जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं वह 3-3, 5-5 हजार पेज हैं। वो 3-3, 5-5 हजार पेज के लिए उसको एक्सटेंशन देनी पड़ती है क्योंकि इतने मोटे मोटे घोटाले किए हैं। नाउ कमिंग टू द मीट ऑफ द मैटर, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, try to conclude also. Please sir, I will. So the state's reorganization, which was brought in 1956, several changes have come, and finality is 2023, where Supreme Court gives control over services to Delhi government, and then ordinance was brought, and now people are saying, why was ordinance brought? Because act could have been brought, bill could have been brought. There was a gap of about 6-7 months, 5-3 months. So my point is, within less than 24 hours, when the Sheesh Mahal Ghotala was being investigated by the Vigilance Department, that not just that officer, 70-80 officers were transferred overnight. Now these are the officers which were investigating the scam. And because they were investigating the scam, overnight, they tried to circumvent the scheme of governance and transfer those officers. Thus, there was a need to bring in an ordinance. And after bringing an ordinance, the bill has been brought in. And this bill has been brought in to correct the status. So, the statutorily, so why was this brought in? This bill has been brought in to statutorily balance the interest of nation with the interest of Union Territory of Delhi in administration of the capital by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the central government as well as GNCTD, that is National Capital Territory region of Delhi. So, by virtue of this, what has really happened is that a particular body, National Capital Civil Services Authority, has been established. And this National Capital Civil Services Authority will have 3 members. Chief Minister, who is not just the Chief Minister, but also the presiding officer of this committee, of this authority. Will have a member secretary, who's a member secretary of Home Secretary of the state of Union Territory of Delhi is going to be the member secretary. Then Chief Secretary of Delhi, because he's the principal officer dealing with administrative issues. What can it do? It can deal with transfers, postings of officials and disciplinary matters. Sole discretion on several matters, including those related to National Capital Civil Services, summoning, prorogation, dissolution of Delhi Legislative Assembly. This is all what has happened. Now, being the capital of Delhi, being the capital of India, Delhi had been administered by the President of India directly earlier. And a sui generis status was, however, conferred on Delhi, whereby it retained the Union Territory nature and with a legislature. A lot has been quoted on 239A, entry 43, list 2. Now the judgment, which has been off-quoted, I'm reading that part. So judgment says, in the absence, and I'm sure people familiar with legal procedures know that any judgment records whole kinds of arguments and all kinds of facts, and then it gives certain specific subject matter related statements. So where it says, in absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services as contained in entry 41 of list 2 of the 7th schedule specifically and in detail, the Honorable Supreme Court was pleased to pass a judgment on such and such date, and whereas in view of its special status as a national capital, a scheme of administration has to be formulated by parliamentary law to balance both local and national democratic interests
which are at stake, which would reflect the aspirations of the people through joint and collective responsibility of both the government of India and government of National Capital Territory of Delhi. So this statutory balance, the interest of nation with interest of union territory, will give purposeful meaning to the manifestation of democratic will. Our constitution, the formation of Delhi as a union territory is unique in itself. It may be remembered that every union territory is administered by the president, acting through an administrator, and while any UT may have an elected body, it does not diminish the supreme control of the president and the parliament over them as per the constitutional scheme. आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर इस मामले में जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं और या जो दानिक्स हैं, उनके ऊपर पोस्टिंग और इन सब चीजों का अधिकार जो है वो केंद्र का है, सेंट्रल सर्विसेज। और उसके अलावा जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, बाकी जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो बॉडी रहेगी वो ओवरसी करेगी। इनके अपॉइंटमेंट्स वैसे होंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और उनका वर्ड जो है वो सर्वोपरि होगा, ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज रायशुमारी से ये काम होगा और रायशुमारी करने में कोई बुराई नहीं है जी। दैट इज व्हाट बैलेंस इज ऑल अबाउट, एंड दिस बैलेंस ऑफ पावर टू गिव जिम्मेवारी एंड टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट दिस लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट। अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं, और वो बात है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीजें की हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस, तो ऐसे में अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जिनको इन्होंने चौकीदार का नाम दिया था, तो जो चौकीदार की सरकार है वो चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा और जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। थैंक यू। श्री रंजीत रेड्डी जी। Thank you very much, sir, for providing me this opportunity to speak on a very important and crucial bill which impacts the federal structure of this country. And I feel this is a leitmotif of the Honorable Prime Minister of this country, the democratic values of the democracy, which is considered to be the largest in the world. I, on my behalf of my party, strongly oppose the bill, lock, stock and barrel. Sir, Abhi, the fight is very open. The discussions are going on since very long. The topic of discussion is what will happen to the Delhi bureaucracy? Whom should they report to? What is their responsibility? Whose accountability is this? Ye dekhe to, my earlier speakers were talking very high about the responsibilities of the National Capital Civil Services Authority, and उन्होंने बोल रही थी हम जवाबदार है public के लिए. What has happened to the government elected by the people? No one talks about that. They talk, the Kejriwal government is not doing anything. Let us not talk on all those things. Who was elected to be seated there? That is very important, sir. When the democracy, such a largest democracy, आज का दिन क्या हो रहा सब? जिसकी लाठी है उसकी बैंस है. That is where it is ending up. So when we talk about the responsibilities, हमारे पास एक blockbuster का movie आया था, RRR. So there were two heroic performances by two important heroes, Ram Charan and Rama Rao. This was directed by a sensational director with his creative skills by name Rajmouli. A 3 hours itna important hai, yeah, this is related to this issue also. Because what has happened here, generally in a governance, what happens, the bureaucrats are responsible to the cabinet of ministers and the chief minister. The cabinet of ministers, this is the first hour. The second hour says that the cabinet of ministers and the honorable chief minister are accountable to the state assembly. And the final hour, the state assembly is answerable to the people. So the Oscar-winning movie, because of the dance sequence of Natu between the two heroes, that is what is going to happen in this situation, sir. So it has to be a Natu between the chief minister of Delhi and the home minister, directed by the prime minister. Is that what has to happen, sir? No, this is what is going to happen now, finally.
The earlier speakers were speaking so much about all these things. The people are matured enough to what is happening in the country. We will be happy if the people are matured enough and see what is happening in the country, sir. So finally, the Delhi bureaucracy has to report to whom is very important. If they have to report to the LG, who is non-elected, or reported to the people-elected governance. This is what has to be decided today, sir. Because when the Honorable Home Minister was talking about the convenience of the judgment, he says, "Oh, taro acha padna tha." Acha hi padte, sir. Sab log acha padte. What exactly the opposition is raising? Let them answer for that also. The clause 239AA clearly says, as per the Constitution, the Legislative Assembly shall have the power to make laws whole or part of the NCT, which is inclusive of what state subject and the concurrent list also. When the services are removed, what will happen, sir? हम तो गठबंधन में part नहीं होता, Home Minister साहब बोल रहे थे. We are not part of गठबंधन, but I am telling you, the center we can understand has overriding powers, but these overriding powers have to be used how, sir? Rationally, ethically, democratically, and morally also. How ethically and morally, 100% this is against the 239AA, sir. This is not only applicable to the Delhi governance, sir. It is applicable to all the states where the opposition parties are there. What has happened to Jammu and Kashmir? The unitary, it was reduced to UT because of some other reasons. But elected government was demolished also. So we are not against the ordinances. Ordinances have to be moved. This government has moved 80, they have promulgated 80 ordinances. But no ordinance should violate the fundamental federal and democratic values of the governance, sir. If the bureaucracy has to report it a non-elected person, what should the elected government do? That is finally what is happening here. And as Lekiji was saying, that they have created an authority, National Capital Civil Services Authority. Very good. It is headed by the 3 members. We understand. As the other MPs spoke, it is a matter of the majority. When 2 of them are controlled by the center, what can the Chief Minister do there? And this authority will recommend for the postings, for the transfers, for the disciplinary matters of all the bureaucrats. When they can do that, she cannot disturb us. We have not disturbed her also. We have not disturbed her, sir. I am not yielding, sir. Sir, I am not yielding, sir. We have not disturbed her also. When the authority, no, sir. I am not yielding, sir. Why should we yield, sir? When the authority can recommend everything and when the LG can take a call on that, what is the role of the authority? What is the role of the Chief Minister there? It is the LG who decides what exactly has to happen. What is happening? The ordinance is just spoken about and the things are happening in Delhi, sir. The State Vigilance Minister was saying that. And in some other department also, what is happening? A case was fought. Thank you. Sir, 2 minutes, sir. कीजिए there are so many authorities. There are 50 authorities which are controlled by the central government. What is the elected government meant for, sir? All these authorities, let it be water regulatory, transport, tourism, jail board, all these are controlled. And these secretaries have started behaving funnily. They would want to report only to the LG, not to the concerned ministers. If this continues, what will happen, sir? Even there is a wording of Supreme Court also, 2018 and 23, which is against this. They clearly says that the LG does not have any independent decision-making power. So if we can draw lines wherever we want, and if we don't want the lines to be drawn, what can the government do, sir? No, this is not the way to do. I honorably request the Home Minister to please retrieve this thing and reconsider and withdraw the bill. We on behalf of my party strongly oppose the bill, sir. Thank you. Shrimati Supriya Sule ji. Thank you, sir. I stand here to oppose the bill brought by the Honorable Home Minister. So the bill is about elected versus the selected. India's a democracy, not a dictatorship as yet. So how an elected government is being demeaned and is going to be run by the selected is my humble question to this government of India right now. The bill is completely undemocratic, unconstitutional, and it's completely against the spirit of cooperative federalism. My learned friend Meenakshi Lekhi ji has just left. She was talking about cooperative federalism and talking about control. I was surprised that in a democracy there's control.
So I was slightly confused because these kind of committees are only in countries like China. I don't think India has this kind of control because I still believe it's a democracy. And while she was talking and running down cooperative federalism, I would like to remind her from the BJP, the Honorable Arun Jaitley ji, who I really miss in this house, always eloquently talked about cooperative federalism and how much they wanted to work with the states and empower states, and that's the beauty of India. And she was talking completely against what the BJP original, or maybe this is 2.0, has a different view. I think I need to know the clarification. I don't know whether it's a generational gap. But in a democracy, control is not the right word. It's a dictatorship which is the right word. The other thing which I wanted to ask her, she was talking in her speech that it's not a full state. I want to very humbly submit to the BJP and ask them, in their manifesto, every Delhi election, the BJP has always asked for a full statehood of Delhi. If I'm wrong, I stand corrected. Anybody can challenge me on this. I'm willing to take my speech back. So when you're talking about a full statehood, so were you lying in the manifesto? Are you lying to the people in Parliament? Parliament is supreme. The Honorable Prime Minister calls it the temple of democracy. So how dare you lie in a temple of democracy? Or are you lying? Then stand up and admit कि हमने जो मैनिफेस्टो में रोका वो झूठ था, हमको ये नहीं था, और एक जुमला था, और हम माफी चाहते हैं इस देश को. They have to apologize to the government because they have lied to the nation. I want a clear clarification from the Honorable M Minister. Another small question: when they talk about full statehood, sir, in the manifesto, they are talking about full statehood for BJP. I want a clarification from the BJP. Then they are saying Jammu Kashmir, which was a full state, you have broken it into 3 states and for 4 into UTs, and they have not had an elections for 4 years. Standing right here, I have clapped for the Honorable Home Minister when he said, "Ek saal mein election lunga." We had all supported him and clapped for him. 4 साल हो गए सर, जम्मू कश्मीर में आज तक इलेक्शन नहीं. पूरे स्टेट को आपके तोड़ के 3 यूटीज बनाए और 1 यूटी का पावर जिसको आप चाहते थे, बीजेपी चाहती थी कि फुल स्टेट हो. So what is this double-faced all the time policy making of the BJP is my clear question to them. They must answer. There are 2 more questions I want to ask technically, which my friend Pinaki Mishra, I think, is just left. I want to ask this question because the Honorable Home Minister talked about it. He said in Article 239AA7 empowers the Parliament to make a law to supplement the provision contained in Article not to violate. And he, in this same reference, said that this will have to go back to the Supreme Court, which is 3 kilometers away. If it's going to get back and there is ambiguity in it, then why are we discussing this and wasting our time? So this is a clarification government share, because the Honorable Home Minister also talked about 239AA7, and so did Pinaki Mishra, who's supporting this, but still saying it will go back because there's ambiguity. So then what is the importance and relevance of Parliament? Can we get a clear clarification, because it's confusing all of us? Another point about the same thing about Article 239AA. It says in Parliament does not enjoy concurrent powers of lawmaking as the issue services under the entry 41 list 2, but no exercise of concurrent powers allows the Parliament to withdraw the same power from the Delhi government. What does this mean, sir? It's a complete contradiction. So if what we are discussing is going to get struck down, whose ego are we pandering here? Who are we intimidating here is my question to this government. Another few questions I want to ask. They talked about Delhi Services Authority. Delhi Service Authority, I have 3 questions. This is similar to the China model, sir. In clause 45D, my question to them is the committees of 3 people. Majority wins so far in a democracy, unless it will change to a dictatorship. I'm not sure. By the way, the people in the power are intimidating us all the time. But we want to ask them, mother of democracy. My question to them is that if there are 3 people and majority wins, 2 secretaries versus 1 chief minister. So if the elected chief minister, who is elected by the people of Delhi, is vetoed by 2 secretaries, then what happened? Appointed will decide. So selected versus appointed. See, there you go. Appointed. My second question to the government is, so will the chief minister be rejected? My first question. My second question is,
Will the two officers overturn the power of a chief minister? Is my question to this government. One more question. Can the LG rule what the honorable chief minister has decided? He can overrule. What is this? So then that leaves the government powerless. Then why have a government in Delhi? Is this what the final agenda is? So this is my clear 3 questions to two small questions which I really need a clarification. Just 2 minutes, sir. See, बड़ी विनम्रता से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, बड़ी विनम्रता से. They talked about morality, which is a good thing. Morality तो होनी चाहिए. और हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था. अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ डेमोक्रेसी. आप जीते, हमारे हम मानते. फिर केजरीवाल जी को एक रूल और इनको एक रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी है. ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर सर. तो ये लोकतंत्र है. ये कहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली और पंजाब भी मिला. हाँ मिला, बट लोकतंत्र है ये सर. So whether you like it or not, today, whether anybody likes it or not, today Punjab and Delhi is ruled by Aam Aadmi Party and not by rigging any election. And if Meenakshi Lekhi ji said rig or election, then what was your government doing? If you're saying Punjab was rigged, was Delhi rigged? Is my question to the government. I want to ask her. Sir Amalati, ये नैतिकता की बात कर रहे थे. इनका लीड स्पीकर नैतिकता की बात कर रहा था. What was he saying? नैतिकता? I didn't disturb anybody. नैतिकता की बात हो रही थी. इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सेक्रेटरी है उनको पकड़ के मारा. सही है बात. Absolutely I agree with her. गलत है. Two wrongs don't make a right. So let's unanimously say कि अगर गलती हो गई है किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सेक्रेटरी को बांधा है, वो गलत है. I agree with you, Meenakshi. It is wrong. But then please tell the Maharashtra government where your 105 MLAs are there, वहाँ 3 लोगों ने, एक बीजेपी के एमएलए ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा, एक बीजेपी एमएलए ने उसको बांधा, और एक इनके एमपी जो इनका है उन्होंने भी एक थप्पड़ मारा अधिकारी को. सो अगर दिल्ली में भी गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है. सो व्हाई कांट बी यूनानिमसली पास दिस? सर एलिगेशंस कांट बी वन वे. सर गठबंधन की बात, 2 very small points. उन्होंने गठबंधन की बात की. आई हैव नो प्रॉब्लम. लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है. इनको बहुत शौक है 2 चीजों को बोलने का. एक बड़े संक्षेप में कह दूंगी और बड़ी विनम्रता से, सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ. चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर डेमोक्रेसी सर. इन्हें कहते हैं परिवारवाद. मानती हूँ, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही. मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है. लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं. लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जीके वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉमरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार. वो सब मेरिट और हम सब परिवार. ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है. जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट. एंड देन अनदर थिंग, सिलेक्टिव एमनीसिया होता है सर. और इनके एमएलए, एमपी, मंत्री सारे पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी वहां चल जाती है. हम करें तो प्रॉब्लम और नहीं. और अनदर थिंग व्हाट दे सेड, दिस नीड्स टू कम ऑन रिकॉर्ड सर. वेरी स्मॉल पॉइंट विच माय फ्रेंड दयानिधि मारन सेड. एनसीपी इन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी. ठीक है, उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है. ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था. So can I get a clarification from this government? Now they are in government with them. So they should take their word back. Yes, Nationalist Congress Party, it is not a naturally corrupt party. इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए. And I want to clarify that it doesn't work. So when we are against you, we are bad. When we join you, we are good. ऐसा नहीं होता. Dr. S.T. Hassan ji. Democratic system, I stand here opposing this. They are intimidating people. This will not happen. This country has always fought against intimidacy. We will fight it and we will win this game. Thank you, sir. Thank you, sir. जी सर, हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं. लेकिन एक मिनट, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 57 एक सेकंड.
जी 357 जी 357 कहता है कि आप यदि किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार है। मीनाक्षी लेखी जी का उन्होंने नाम लिया है, आप कृपया उनको इजाजत नहीं, वो कह रही है क्या वो बोलने को नहीं, अधिकार तो है, लेकिन वो मैंने एक सेकंड मैंने उनसे पूछा, बैठिए निशिकांत जी बैठिए, मैंने उनसे पूछा आप कुछ कहेंगी, मैंने इशारे में पूछा। प्लीज सर बोलिए। सर मैंने जो बात कही थी, हाँ। मैंने कहा था चुनाव कैसे जीता, मतलब झूठे वायदे एक उसमें हो सकता है, रिगिंग वाली बात जो थी उसका मैंने पंचायत वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया था, वो उदाहरण दिया था मैंने, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास किया, तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि झूठे वायदे कि बिजली माफ और पानी हाफ, वो पानी माफ और बिजली हाफ, वो भी दिल्ली देख रही है, वो सब भी दिल्ली देख रही है, और इसी कारण से वो जीते हैं। जी। अपने वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। और जहां तक गिरगिट की कहानी में एक कैमियो रोल रह गया, वो है गिरगिट का। तो आज गिरगिट कह रहा था कि मैं चुल्लू पर पानी में डूबना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कुर्सी के लिए एक शहर के आधे राज्य के 1/4 मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं। ओके नाउ डॉक्टर हसन, डॉक्टर एस हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार ने इसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, मेरा अपने साथियों से ये सवाल है, क्या आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में हैं या नहीं है? मंत्री जी मुझे बताने का कष्ट करें। हमारी देश की राजनीति के बहुत बड़े लीजेंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या ख्याल था इस बारे में आप सबको पता है। वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में थे। आज आप क्यों इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आपने कम कर दिया, डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स पे हावी कर दिया। ब्यूरोक्रेट्स का होना तो ये चाहिए था जैसे कि मेयर नगर आयुक्त का सीआर लिखता है, उसी तरह से हम सारे सांसद और विधायक अपने यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का गोपनीय रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, ताकि इन पे कंट्रोल लें। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर को भी एलजी का और राज्यपाल का सीआर लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोटालों की बात कर रहे हैं, घोटाले कम से कम ये आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आपने तो इन 9 सालों में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अडानी से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तक हम कौन कौन से घोटाले गिनाए? आपने कौन कौन से घोटाले गिनाए? सर हर घोटाले की जांच होनी चाहिए। हमारे पास एजेंसीज हैं, जो भी घोटाला कर रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन सर इस तरह से अगर आप इसको पूर्ण राज्य देने का दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हैं? बंद करिए इलेक्शन, ये क्यों ड्रामा चल रहा है? और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं तो पूरा अधिकार दिए चीफ मिनिस्टर को कि ठीक से वह गवर्नेंस कर सके, वरना ये अधिकारी किसी को कुछ करने नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chairman. I am rising on behalf of my party to strongly oppose the government of the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Let me make it clear at the outset that this bill is no ordinary piece of legislation. It represents a grave chapter in the history of the Indian Republic, seeking to ratify an ordinance that in many ways is an assault on our democratic heritage and the spirit of federalism. During the introduction of the bill itself, sir, I had filed a motion strongly opposing its very introduction in this House at a time when a motion of no confidence is pending for discussion. In fact, the Bhagavad Gita of Parliamentary Practice and Procedure, Call and Shaktar, page 772, explicitly states, when the leave of the House to the moving of a motion of no confidence has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the government till the motion of no confidence is disposed of.
Sir, in 27 no-confidence motions brought since independence to this House, no bills were debated and passed before this government did so with 2 bills in 2018. Therefore, such an improper introduction of a substantive policy change while a no-confidence motion is pending is against democratic morality, to use a word much favoured by the Treasury benches. Let me remind my colleagues in this House that it was almost 4 years ago exactly when this government unceremoniously passed a bill that sealed the fate of a state government practically overnight, in the rampant disregard for the basic constitutional relationship of the people of Jammu and Kashmir to the Republic of India. Without consulting them or their elected representatives, this government showcased the same attitude that we are seeing today. A breathtaking betrayal of our democratic political traditions, culture, and utter contempt for the people of the state and of the value of the political representation that these citizens of India give themselves through elections. 4 years later, we're back in the House with a government that is clearly bringing the same attitude to our national capital. We saw when the Home Minister spoke. Sir, I'm sorry, I'm not yielding. I'm not yielding. Point of order में yielding की बात नहीं होती. Point of order is point of order. Please, This is my right. Listen. No. It is Yield or not, this is my right. Yes, ridiculous. Yes, it is right of the House. 352(1). जी. 352(1). अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसको रोज सुन रहा है और उसके बारे में इन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया. Sir, I am referring to something that happened in this House 4 years ago. Okay. It's a ridiculous point of order, sir. Now, the Home Minister, in introducing this bill, attempted to invoke Nehruji in his support. And I think that the expression that my friend Dayanidhi Maran was quoting in Tamil was that the devil can quote scripture for his own purposes. The truth is that times change, sir. Times change, and with that, facts change as well. There were no elected representatives for Delhi in an assembly in those days, sir. We were talking about a different Delhi and we were talking about a different India. Today, 75 years have happened since independence, 76. In any case, I have to say to my dear friends in the Treasury benches, you oppose everything Nehru said, you oppose everything Nehru stood for, so why not this one too? Oppose him saying that Delhi should be under the central government. That will be the end of the conversation. They also went on about alliance politics, but let me stress, Mr. Chairman, this is not about alliance politics, this is about a principle. And the principle is that the Democratic and Federal Republic of India finds a grave shadow cast upon it today, sir. The Union of States, so original and aspirational in its genesis, faces a crisis of the federal division of powers. We saw the Minister of State for External Affairs choosing to intervene on internal affairs. Fine, that's your party's prerogative. But the fact is that she asserted that India is not federal. She said it 3 times. Why then do we have a state list, a concurrent list, a union list? Because we are federal. I'm sorry, ma'am, I'm not yielding. I'm sorry. I'm responding to a debate, to a point made in a debate. I have every right to do so, sir. Why does the government and the Prime Minister speak of cooperative federalism if she is right and we are not federal? Obviously, the government wants to sing the virtues of cooperative federalism, but in stark contrast to that, we see the ruling party impinging upon the sovereign domain of the states, from vacillating on GST dues and Manrega payments to states, to bulldozing through laws and subjects from the state list. A blatant subversion of the constitutional separation of powers is taking place again today through this bill. The difference is that this time around, the Honourable Supreme Court was loud, clear and unequivocal, and the government seems determined to ignore it. Let me set out before the House the 3 dangerous prongs of this amendment, sir. It removes services from the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly. In other words, it amends the Constitution without being a Constituent Assembly, a constitutional amendment bill. Second, it establishes this National Capital Civil Services Authority, consisting, as everyone has pointed out, of the Chief Minister, Chief Secretary, Principal Home Secretary. Now, the authority in which the elected CM can be outvoted by the other 2 can even convene on the basis of quorum of 2. So even without the CM, the 2 officials can get together and decide anything they like, sir. They can make then recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfers, postings, officials, disciplinary matters, and bureaucrats are going to henceforth exercise authority that voters have given to their elected public representatives.
If BJP was in power in Delhi, sir, would they have accepted this? It seems a case of where you stand depends on where you sit. Now, third point, sir. The bill empowers the Lieutenant Governor to exercise his sole discretion on several matters, including those related to this civil services, the summoning, prorogation and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. So this implies that the elected Chief Minister may even be unable to convene a session needed for essential government business. The LG can overrule him. Even a unanimous decision of this authority can be overruled by the LG. He can define the powers and duties of the officers of the Delhi government, superseding the ministers. Now, sir, executive lawmaking through an ordinance, as the Supreme Court held in DC Wadhwa 1987, is only to meet an extraordinary situation and cannot be perverted to serve political ends, quote unquote, from the Supreme Court. But the government's arguments, even today, were all political, sir. And what is interesting is it has intervened on political grounds in a brazen manner. Most crucially, they have added this subject of the exemption of services to the existing exemptions in the Constitution, land, public order and police, under Article 239AA, which everyone has been citing. To do it without amending the Constitution, which requires a two-thirds majority and a different process, is an act of constitutional subterfuge, sir. Now, how ironic that when the Supreme Court has said that there is a complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, you don't want to discuss it. But when you want to amend the constitutional machinery when it is functioning in working order in Delhi without admitting it. What kind of contradiction this is, sir? Now, is an ordinance or a bill even constitutionally permissible when the very framework of the Constitution's basic structure is being altered? Article 239AA provides the Delhi Legislative Assembly with powers to make laws on subjects in the state list and the concurrent list, barring police, public order and land. Agreed. Parliament, of course, their right, can legislate on subjects under the state list with respect to Delhi, but the bill specifies that the Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the subject of services, which actually comes under the state list. So by doing so, the bill effectively expands the subjects that the Delhi Assembly cannot legislate on, and therefore is changing the constitutional framework. Under Article 368 of the Constitution, a constitutional amendment has to be initiated for such an action. So I ask you, Mr. Chairman, sir, how can you admit this bill except under the rubric of a constitutional amendment bill? It just seems to me, sir, this is completely out of order in terms of the procedures of this House. Now, let me take you back to what the Court has said in its judgment of May 2023. The Supreme Court has argued that democratic government rests on a triple chain of accountability. Civil servants are accountable to ministers, ministers are accountable to legislators, and legislators are accountable to the electorate. That is how we all function, sir. That's our democracy. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its own domain, then this key principle of the triple chain of collective responsibility becomes redundant, sir. By severing the first link of the triple chain of accountability, the bill is essentially contradicting the principles of parliamentary democracy in the very year that the Prime Minister has hailed us as the mother of all democracy. Can a mother treat her children this way, sir? Now, I do want to say, sir, Article 239AA, which... Huh? Well, even stepmothers would not do this, I assure you. Confer a special status on the National Capital Territory, constitutionally entrenched a representative form of government, and incorporated a spirit of federalism so that the residents of the capital of India have a say in how they are governed, sir. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected them, sir. Now, the Supreme Court has said that Delhi has a sui generis status. They keep saying it's not a full state, but it has a special status. The court noted that the principles of federalism and democracy are interlinked, since the state's exercise of legislative power gives effect to people's aspirations, and that federalism, I'm quoting the Supreme Court, creates dual manifestations of public will in which the priorities of the two sets of governments are not just bound to be different, but are intended to be different, quote unquote. So what are they talking about, sir, on the Treasury benches? Now, the Supreme Court's May judgment reiterates the principle spelt out by its 2018 judgment that ministers bear responsibility before the legislature for every action undertaken by public officials in their respective department.
The court has observed a paramount feature of the federal constitution is this distribution of powers in such a way that the ministers exercise their exclusive power over administration. Now, how can you then say that a minister is responsible for an official who in fact can supersede him on the provisions of this bill? If you are a minister, Mr. Chairman, sir, and your official is taking a decision you don't approve of, how are you accountable? What happened to the core principle of parliamentary democracy, sir? And you cannot hold your officials accountable even for bureaucratic delays. They are larger than you, sir. As Supriya Sule said, the selected are overtaking the elected. Now, the Lieutenant Governor under Article 239AA has to act on the aid and advice of the Council of Ministers, except when exercising discretionary powers. Now, the Transaction of Business Rules of the Government of NCT Delhi, 1993, provides that certain matters must be submitted to the LG through the Chief Minister and Chief Secretary for his opinion prior to the issue of any order. And these are spelled out, sir. Peace and tranquility of Delhi, relations of the Delhi government with other state governments, relations of the Delhi government with the Supreme Court, the High Court of Delhi, and summoning, proroguing and dissolving of the Legislative Assembly. The bill expands those mentioned matters now to include the relations of the Delhi government with the central government. Additionally, it expands the powers of the Lieutenant Governor's opinion to have sole discretionary power on these matters. If there is any difference of opinion, even on matters beyond these three items, between the LG and the CM, the LG takes precedence. Now, this is the point that my respected colleague from the DMK was making, sir. Already in a time when there is a lot of controversy about the powers being exercised by governors in many states, we are now giving the Lieutenant Governor of Delhi an unprecedented degree of power over the elected representatives of the people who are supposed to implement the wishes of the public according even to the Supreme Court, sir. I'll conclude in 2 minutes, sir. The basic point is, you all know, Lieutenant Governors and Governors are supposed to act on the aid and advice of the Council of Ministers on matters within their executive competence. So you're contradicting the 2018 judgment of the Supreme Court, which stated that the decision-making power lies with the elected government. How can this pass the filter of this hallowed house, sir? What we have repeatedly seen under this government is a brazen effort to curtail the autonomy of states. The PM talks about cooperative federalism, but we are witnessing instead coercive federalism, sir, that seeks to centralize all power in the hands of the central government. And the problem is, it looks as if in the new India, some states will come first if they are ruled by the right party. Others must remain subservient to the political wishes of those in Delhi. I want to conclude, sir, with just two more thoughts. The first is, there are multiple aspects to this bill. There's been not to the bill specifically, but to what the bill represents. The cultural aspect of assaults on states' rights by the unjustified push towards imposing Hindi on the southern states. There's a law and enforcement angle through the weaponization of independent regulatory and investigative bodies like the ED, the CBI, the IT department. There's also definitely the use of legislation like the Disaster Management Act. We saw an obscure provision of which was used to ride roughshod over states' rights in imposing successive lockdowns during COVID without consulting states. We've seen, sir, in the creation and misuse of the PM Cares Fund, which limited the flow of cash to the state-run Chief Minister's disaster relief funds. We've seen this with the acceleration of centrally sponsored schemes, which Now seeks conclude. to... Sir, I'm just illustrating the problem of states' rights and federalism, sir. So I do want to say, and finally the large number of cesses that are currently being levied by the central government, the proceeds of which are not being shared with states, sir. So I'm sorry to say, is this a new definition of na khaunga, na khane dunga? I'm very, very concerned, sir, that this legislation is putting uniformity and central control over the democratic interests of our country that the Prime Minister hails. And I do want to stress, fundamentally, this is a basic constitutional question. The highest court of the land has ruled in favour of both the spirit and the letter of the Constitution. Sir, we owe ourselves more respect. So Speaker Sahab bolte hain ki is Sabha ki garima ko respect karo, sir. We should definitely treat this House with more dignity than to let such a travesty of a bill pass this House. Thank you, sir, and Jai Hind. जी मसूदी साहब प्लीज चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया मुझे इस बिल पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब, मैं द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 की मुकाबलत में खड़ा हूँ। जनाब, दरअसल ये एक
हमला है आइन पर और आइन के जो फंडामेंटल जो बुनियादी आइन की जो रूह है उस पर ये हमला है। तो जनाब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यहाँ ये कहा गया कि फेडरलिज्म, इंडिया एक फेडरल स्टेट नहीं है और ये फेडरलिज्म इसका हिस्सा नहीं, इसके आइन का। जनाब केशवचंद्र भारती केस में स्पष्ट किया, साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसको पामाल किए जाने की कोई इजाजत नहीं। तो जनाब दरअसल बात क्या है, मामला ये है कि ये लोकशाही और अफसरशाही के दरमियान एक मामला है। ये प्रयास किया जा रहा है कि अफसरशाही हो और लोकशाही नहीं हो। देखिए जनाब, आइन के तहत जो जब हमने अपने खुद को एक आइन दिया, वी द पीपल, हम अपने आप को आइन दिया, तो हमने एक नजरिया दिया कि ये कहीं मैप आउट किया और ये कहा कि कैसे चलेगा हमारा मुल्क, कैसे चलेगा। उसमें रियासतों को हुकूक दिए गए और मरकज को हुकूक दिए गए, लेकिन ये इजाजत नहीं दी और उनका ये बाज़ाब्ता डिमार्केट किया गया कि उनके स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, क्या अपना अपना स्फीयर होगा। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल से कोशिश ये की जा रही है कि जो हुकूक हैं, जो भी इख्तियारात हैं दिल्ली के, वो खुद ले जाए। जब यहाँ बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये मामूल बन गया इस सरकार का कि आक्रमण करने का आइन पर। और ये आक्रमण हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और दफा 370 और 35A को पामाल किया गया और आइन रोंद कर वो सारे फैसले किए गए। तो जनाब आप 356 का सहारा लेकर जो किसी भी जगह एक लेबॉर्ट्री बनाया गया जम्मू कश्मीर को, ये जो लेबॉर्ट्री बन गई और तजुर्बा किया गया, वो किसी भी सूबे के साथ, किसी भी स्टेट के साथ किया जा सकता है। 356 का सहारा लेकर एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और सबस्टेंटिव चेंजेस किए गए 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई, जबकि 356 एक इमरजेंसी प्रोविजन है और वो रेस्टोरेटिव है, वो सिर्फ जमहूरियत बहाल करने का एक प्रयास है, एक मामला है। तो जनाब क्या नहीं, और आजकल क्या किया जा रहा है, 1.5 करोड़ लोगों को जनाब कोई असेंबली नहीं है 9 साल से, कोई हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं, वहीं पर आओ ना, क्योंकि उसके साथ मुंसलिक है ना, तो कोई हुकूमत नहीं है और नहीं असेंबली का इंतखाब करने के लिए, मुंतखब करने के लिए इनके पास कोई हिम्मत है। तो जनाब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नॉर्मलसी का। जनाब आज जम्मू कश्मीर में छोटे जो ताजर हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी जायदादें जब्त कर रहा है। जब असली बिल पर आ रहा हूँ जनाब, कल यहाँ कहा गया कि 800 यूनिट बनाएंगे। आज ही मुझे कश्मीरी पंडित दोस्त ने फोन किया कि नहीं, मुलाजिमों को उनके जो वहाँ जहाँ पर उनको रखा गया जम्मू कश्मीर में काजीगुंड वगैरह में, नहीं बिल पर मैं आऊँगा। तो जनाब ये भी उसी तसलसल में है जो वहाँ किया गया, ये भी उसी तसल्सल में, और यही बाकी स्टेटस में भी हो सकता है, क्योंकि इतना एक स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म है ही नहीं इंडिया में, ये फेडरल स्टेट है ही नहीं। अब जनाब इस बिल पर देखिए, सारा प्रयास है, सारा मकसद है केंद्रित करना जो भी पावर है, जो भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, ताकि एक चुनी हुई सरकार जो है, उस चुनी हुई सरकार के जो हुकूक हैं, उसके जो इख्तियारात हैं, उनको बिल्कुल खत्म किया जाए और उनको बिल्कुल गैर मौसर बनाया जाए। अब जनाब अगर थोड़ा एक देखेंगे जनाब, इसमें प्रयास है, इसमें यह कहा गया है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें केंद्रित होंगे, जिसमें मरकूज होंगे सारी पावर्स। अब जनाब उसके क्या इख्तियारात हैं, अगर वहां पर सर्वसम्मति भी हो, अभी कहा गया कि अगर ये होगा कि चीफ मिनिस्टर को वो रूल करेंगे 2 ब्यूरोक्रेट्स जो मरकज के बनाए हुए होंगे, तो ये कैसा सिस्टम है। लेकिन अगर वो सहमति भी हो, फिर भी आप देखिए, फिर भी जो रिकमेंडेशन अगर वो यूनानिमस भी हो, फिर भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दरकिनार करने का और वापस भेजने का। तो जनाब ये कैसा सिस्टम बनाया जाए, कैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जबकि एक चुनी हुई सरकार जो है, चुनी हुई असेंबली है, उसके जो इख्तियारात है और उसका जो चुना हुआ वजीर आला है, उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करके और उसके सारे इख्तियारात को बिल्कुल गैर मौसर करके एक इख्तियारात मरकूज किए जा रहे हैं जो नॉमी है। जैसे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में सदर जमहूरियत ने खुद की कॉन्फ्रेंस खुद ली, क्योंकि वहाँ के गवर्नर जो थे उनके बनाए हुए थे, वो कैसे कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस हुई जो आइन का तकाजा था, वो दरकिनार किया गया। जहाँ ये डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक तरफ जो दिशा में मुल्क जा रहा है, जी क्या किया जा रहा है, कैसे शोबों को। और जम्मू कश्मीर के मामले में जनाब बाकी जगह जनाब 3 लिस्ट थे, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो खुदमुख्तारी थी उसमें जनाब स्टेट लिस्ट था ही नहीं, क्योंकि जो हमने दिया था केंद्र को सिर्फ वही केंद्र के पास, बार-बार उधर चले जाते हैं। और कहाँ जाऊँ, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जम्मू कश्मीर के बगैर और कहाँ जाऊँ। तो जनाब
बस ये कंक्लूड करूंगा। तो जनाब बात ये है कि जनाब ये भी उसी गैर, अब देखिए एक और बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। जब अगर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सामने मामला है तो प्रॉपर्टी ये है, मॉरलिटी ये है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए, वो क्या कहेगा फिर किया जाए। हो नहीं रहा जिस तरह यहाँ अमेंडमेंट बिल हो रही है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ये है कि हम टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उनको अपना फैसला देने। जैसे ऑर्डिनेंस बिल की अमेंडमेंट लाई गई वो भी और उसको ऑपरेशनल किया गया। भाई ये जो मॉरलिटी है, जो एथिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, उसका पास प्लीज। जब मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल को मुखालफत करता हूँ और ये मैं इस्दा करता हूँ इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल आईन के मुखालिफ है। जी श्री अब्दुल समद सामदानी जी, जी प्लीज। Thank you, sir. Sir, I oppose this bill. Sir, it is a very critical legislation that is definitely going to upset and disrupt the delicate balance between the center and the states. Sir, it is against the very basic constitutional dictum that India shall be a union of states. I am sorry to say that it is a move for greater centralization against Part 11th of the Constitution, which governs the relation between the center and the state. Sir, this is not well intended, it is ill motivated, and sir, the motivation behind this legislation is very ulterior. It is equal to nullifying the recent constitutional bench verdict, which says, sir, I quote, the subjects of services covered under 41 state list will fall under executive and legislative domains of the Delhi government, unquote. Sir, that is why the legislative quality and the competence of this bill is under question. Sir, we all know that it is against cooperative federalism. Nobody can justify. Whatever points may be brought by the learned members on the other side, you can't conceal the negative aspects of this bill, which goes against the very spirit of cooperative federalism. Sir, it is highly condemnable that potentially divisive issues are brought to focus. It is not for the good of the nation. Maybe it is done by the government in the run-up to the next year's election. But sir, it will not be for the good of the nation. Sir, another worst example for this kind of negative attitude is pitchforking and triggering the dormant and contentious debates around the Uniform Civil Code. That is also done in this juncture. Sir, India has remained uniquely unified despite infinite multiplicities of the country in various spheres of its life. So, sir, we have to protect the values and ethos of cooperative federalism. It is by protecting the diversity alone we will be able to protect the values of federalism. Sir, the diversity cannot be subsumed in an artificial uniformity. That is what we want from the government also. Sir, I can't understand why the government is rushing for and pushing for this kind of negative legislation, which are against the very norms of social, religious, linguistic, ethnic, and political diversity of the country. It is going to surely affect badly our structures of fiscal federalism, linguistic federalism, cultural federalism, and also political federalism. As well as I add our service-oriented federalism, which this new legislation is definitely going to badly affect. So, sir, I have to say that it is an attempt to bolster center's hold on the capital's administration, an encroachment on the remit of the state government,
and an expanding the ambit of the center. Sir, we can't understand. Instead of intervening in the matters of and setting aright the burning matters in the states like Manipur and Haryana, why the government is bringing forth this kind of very negative legislations which are against the very spirit of Constitution? This bill under discussion is, sir, against Article 2(3)AA, and also it is against the recommendations of Sarkaria Commission, Venkatachalya Commission. Nobody can conceal this. Sir, the foundation of this enactment is very, very weak. As the poet said, sir, जो शाख नाजुक पे आशियान बनेगा वो नापायदार रहेगा. So, sir, the nest built on a very weak and tender branch of the tree, it will not last. And ये सारी कोशिश सर हो रहा है दिल्ली को जीतने के लिए. दिल्ली को सर हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है. हाँ, दिल जीतने के लिए ये काफी नहीं होगा. इसी तरह के कानून से दिल को जीत नहीं सकते. दिल्ली को जीतने के लिए मोहब्बत, प्यार, रवादारी, भाईचारगी चाहिए. ये आपके पास नहीं है. और इसके लिए राजनीतिक शक्ति भी चाहिए जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है. So, sir, I have to remind the government that the Supreme Court had held that the states are not mere appendages of the center. This is the decision and the declaration made by the Supreme Court. And also I have to request the government to pay an urgent notice to Ambedkar's, sir, 1 minute. Ambedkar's December 1952 lecture on conditions precedent for the successful working of democracy. So, sir, what I feel is that this kind of negative legislations will affect the spirit of our federalism, our cooperative federalism, and I oppose this kind of an enactment, and I request the government to withdraw this kind of a legislation. Thank you, sir. Thank you. महोदय, मैं जब आज आ रहा था संसद में तो हमें एक दिल्ली के व्यक्ति मिले, बोले जरा जाके भैया बताना मुझे कि जो व्यक्ति लगातार सबको चोर कहता रहा आज उसी को सही ठहराने कैसे लोग बैठे हैं. मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एक बात सदन को ध्यान रहे अध्यक्ष जी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे जो आज व्यक्ति बैठा है वो पहला मुख्यमंत्री नहीं है, वो 5वां मुख्यमंत्री है. इनके पहले शीला दीक्षित जी बैठी थी, उनके पहले सुषमा स्वराज जी बैठी थी, उनके पहले साहेब सिंह वर्मा जी बैठे थे और पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे. कभी भी इस तरह का संकट दिल्ली में नहीं आया था जो आज आया है. अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सदस्य लोक लाज की बात कर रहे थे. बिहार के नेता हैं, बिहार के नेता के मुंह से लोक लाज सुन के हमको हमारे भोजपुरी का एक कहावत याद आ रहा था कि सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोलत अटे, जना में 72 छेद बाटे. फिर भी सभापति महोदय, हम भी चुन के आए हैं. हमारे साथियों ने कई बार कहा वो चुन के आए हैं, चुन के आए हैं, चुन के आए हैं. हम भी चुन के आए हैं, 2-2 बार चुन के आए हैं. और यही नहीं, हम निगम में भी चुन के आए हैं. और ये सभी चुन के आए हैं जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं. लेकिन पता नहीं क्यों उनको अपने ही कानून बनाने की क्षमता, योग्यता पर संदेह हो गया है. कोई बात नहीं, डिसाइड करेगी देश की जनता. जब कोविड आया था तो याद करिए क्या हुआ था. देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सड़कों पे थे. जब कोविड आया तो ये अस्पताल दिल्ली का दौरा कर रहे थे और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री थे वो कहीं अंदर बैठ करके पता नहीं कौन सी मच्छरदानी ओढ़ के बैठे हुए थे. जब हमारे दिल्ली में बाढ़ आया तो अमित शाह जी की व्यवस्था संभाल रही थी और ये व्यक्ति के घर में जब पानी घुसने लगा तब जाके, जैसे कभी कभी वो बिल में पानी जाता है तो कुछ जानवर निकल के आ जाते हैं, उस तरह से ऐसा देखा हमने और दिल्ली बर्बाद हो गई. मैं आज आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तब या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीश महल में सो रहे होते हैं या तो शराब घोटाले की प्लानिंग कर रहे होते हैं. मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने बताना चाहता हूं
कि इस डिबेट से वो व्यक्ति बहुत खुश होगा, क्योंकि उसको तो अब कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि जो कोविड में किराएदारों से वादा किया था कि किराएदार लोग भागना मत, तुम्हारा किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन आज तक किराएदारों को यह सुविधा नहीं मिली। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे साथियों ने भी कहा, यमुना गंदी कैसे हो गई, डीटीसी घोटाला कैसे हो गया, यहाँ पीएम आवास योजना क्यों नहीं चालू है, यहाँ पे आयुष्मान योजना क्यों दिल्ली में बंद हो गई, यहाँ बुजुर्गों का पेंशन क्यों बंद है, यहाँ जल बोर्ड घोटाला क्यों हो गया, यहाँ गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं 9 साल से बन रहा है। सभापति महोदय, आप वहां बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, जहां गरीबों के लिए अनाज कितनी भारी मात्रा में दे रहे हैं, दिल्ली के गलियों में जाइएगा तो अनाज के लिए राशन कार्ड नहीं बनने के कारण लोग रो रहे हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं, कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक ने पकड़कर, पुलिस नहीं होती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। हम चाहते हैं नेताओं पे हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली इस प्रकार से रो रही है। एक नया कॉलेज नहीं 10 साल में, एक नया स्कूल नहीं। ये सवाल अब पूछे तो कौन पूछे। झुग्गी वासियों को घर देने का वादा था दिल्ली मुख्यमंत्री का, देना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री जी को। अभी 3025 लोगों को दिया। कई हमारे साथियों ने पूछा अध्यादेश क्यों आया। आप याद करिए, 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो दूसरे दिन जिस व्यक्ति के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जो व्यक्ति फोन पे कहा है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, इसको 100 करोड़ रुपया दे देना, वो जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं। आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अभी स्पष्टता भी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा हमारे कई साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि अस्पष्टता को बनाए रखने के लिए यह सदन कानून बना सकता है। उसके बाद भी बिना उस पैरा को पढ़े हुए, पैरा 95 को, इन्होंने तुरंत सवेरे किस अधिकारी का ट्रांसफर किया, जो विजिलेंस ऑफिसर था। मेरे विद्वान साथियों, आप भी सोचो, आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो गृह मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे कई एंगल से ये शंका हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सभापति महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आपको मैं बताता हूं क्यों। अभी जब यमुना जी में बाढ़ आया, अभी जब मैं यमुना जी में बाढ़ में गया तो मैं मुख्यमंत्री का एक बयान सुनता हूं, कई लोगों के कागज बह गए हैं, उनके कागज फिर से बनाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किसके कागज बहे। हम तो जिनके जिनके लिए खाना लेकर के गए, जिनके जिनके लिए हम रोटी लेकर के गए, जिनके लिए हम नाव लेकर के गए, वो तो अपना सारा सामान लेकर के सड़क पे सिर्फ टेंट का इंतजार कर रहे थे। कागज किसका बनाने की बात कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। क्योंकि मुझे बिहार की महिलाओं ने कहा, मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, उनका बयान दे सकता हूं। बिहार की, यूपी की महिलाएं कह रही हैं, हमें तो ये मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। मेरे सभी साथियों, आप विचार करिएगा। और मैं ये बात बताते हुए, हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे कि ये किस कारण से ये बिल आ रहा है। सुप्रिया सुले जी यहां बैठी थी, अभी है नहीं, उन्होंने मिस कोट किया सदन को। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य पे हम हमेशा मैनिफेस्टो में देते हैं। मैं तो दिल्ली में 2013 से हूं, न 2013 के चुनाव में, न 2014, न 2015, न 2017, न 19, न 20, कभी भी हमने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। आप इतने बड़े सदन को गुमराह न करें। और जहां तक एलजी की बात है, एलजी वही टोकते हैं जहां संविधान का हनन होता है। सभापति महोदय, मैं G20 होने वाली है दिल्ली में। अभी एक दिन मैं अपने घर में रात के 12:30 बजे सोने की तैयारी कर रहा था, तभी पता चला एलजी महोदय बाहर सड़कों पे पेड़ पौधों की वो सुंदरता देखने आए हैं। मैं हैरान था। मैं घर से बाहर निकला और उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने शीश महल में सोए हुए हैं। तब मुझे ये कहना पड़ता है कि सभापति महोदय, ये जो बिल है, ये दिल्ली के खुशियों का बिल है। इस बिल को मैं तो प्रार्थना करूंगा, आप बहस करिए, बहस करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी साथी बोल रहे हैं, कई दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। लेकिन ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का,
दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। इसको आप सब पास करें, यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री विनायक राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के तरफ से मुझे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ साथ में ये जो बिल आया है, दिल्ली के बारे में जो बिल आया है, उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहा हूं। सभापति महोदय, वैसा देखा जाए तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने विवेचन जो किया, उसमें इस बिल हम क्यों ला रहे हैं इसका स्पष्टता तो की है। और उसी में इस बिल के पीछे जो कपट नीति है केंद्र सरकार की, वो सामने आ चुकी है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2015 के पहले सब अच्छा चल रहा था, लेकिन 2015 के बाद इस दिल्ली में जिस तरीके से मतदारों ने परिवर्तन निर्माण किया राजकीय क्षेत्र में, और इस परिवर्तन से वहां मतदारों के इच्छा से जो लोगों ने सरकार स्थापित किया, ऐसे आम आदमी के पार्टी के तरफ से जो एक कपट नीति निर्माण हुई, उसके लिए आज का बिल का जन्म हो चुका है। अध्यक्ष सभापति महोदय, वैसा देखा जाए तो दिल्ली ये लोकतंत्र की रक्षा करने वाला, ये लोकशाही का मंदिर में हम सब लोग बैठे, लेकिन दुर्भाग्य से यही लोकशाही के मंदिर में दिल्ली के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत इस बिल के माध्यम से हो रही है, ऐसा डर मुझे लगता है। क्योंकि एक दिल्ली में विधानसभा है, लोगों के माध्यम से पार्षद विधायक चुने जाते हैं, लोगों से माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद का निर्माण हो चुका है। पिछले जो पार्षदों का चुनाव हुआ कारपोरेशन का, इस चुनाव में सारे के सारे दिल्ली में उनका जो रवैया है दिल्ली वासियों का, वो स्पष्ट हो चुका। काफी प्रयासों के बाद में भी वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन न आने के जो एक दिल में उनकी जो ये थी बुरी भावना थी, वो उनके आज तक उनको सता रही थी। और देख रहे थे एक न एक दिन इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। दुर्भाग्य की बात ऐसे सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बावजूद भी 19 मई को आदेश दिया, और दिल्ली में लोकतंत्र से निर्माण हुए राज्यकर्ताओं जो है, राज्य शासन की जो प्रक्रिया है, उन्हें पूरी तरीके से हक प्राप्त होना चाहिए, ये ऐसा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देने के बावजूद वही दिन में ऐसा ऑर्डिनेंस निकालकर लोकतंत्र की हत्या करना और प्रशासकीय अमल में लाना, ये निंदनीय भाव है। इसकी मैं तो निंदा करता हूं, लेकिन पूरे देश के लिए क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी के कृपा से या उस वक्त के हमारे पूर्वजों के कृपा से ये जो लोकतंत्र की जो देन हमें मिली है, ऐसे लोकतंत्र का विसर्जन यमुना नदी में करने की शुरुआत इस राज्य के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है क्या? और सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के आज के जो राज्यकर्ता है, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल हो, कई कन्यो, जैसे गृह मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा करके जब बंगलो बनाया, ऐसा उनके बयान में आया है कि एक ही अगर एक कारण है तो आपके पास पिछले कई दिनों से जेब में ईडी का एक राक्षस आप लेकर घूम रहे पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में, बंगाल हो, आसाम हो। एक ईडी का जो है डायरेक्टर, उसका तो इस्तेमाल आप करते आ रहे। महाराष्ट्र की आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे शिवसेना के गद्दार गठ हो या एनसीपी के गद्दार गठ हो, उनके सारे बहुत कई लोगों के ऊपर ईडी का रेड हुई थी, कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। कल भ्रष्टाचार का आरोप करते थे और आज उनको लेकर मंत्रिपरिषद में आप बैठे जी। हाँ, ये तो वॉशिंग मशीन से भी ज्यादा लॉन्ड्री हो चुकी है।
ये लॉन्ड्री में डालना, भ्रष्टाचार का आरोप करना, लॉन्ड्री में डालना और मंत्री परिषद में लाकर बैठना दुर्भाग्य की बात। ऐसे सभापति महोदय, अब ये जो एनडीए की जो मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बाएं हाथ में दाएं हाथ में भ्रष्टाचार का आरोप जिनके ऊपर हुआ था, ऐसे दो लोग बैठे थे। और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, ऐसे आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी लंबे दूर बैठे थे। तो ये शासन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है और इसीलिए आप दिल्ली में एलजी का हाथ में पूरी दिल्ली दे रहे। एक मिनट में सभापति महोदय, 1 मिनट में दिल्ली में आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो दिल्ली के सारे जनता का अवमान आप कर रहे हैं। दिल्ली के सारे जनता का, सारे दिल्ली वासियों ने इतनी प्रयासों आप करने के बाद भी कॉर्पोरेशन में बहुमत अरविंद केजरीवाल के पार्टी को प्राप्त करके देने के बाद भी उन्हें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आप चुनने नहीं दिया कई दिनों तक, मेयर चुनने के लिए नहीं दिया कई दिनों तक। ये कौन सी राजनीति हो सकती है? अभी खुल्लम खुला होगा, चलो एलजी के पास राज दे दो और अपने के लिए जो चाहिए वो करे। इसका ऐसा इस बिल के माध्यम से करने के लिए जा रहे। सभापति महोदय, ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले बिल का शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी कड़ा विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। श्री A.M. आरिफ जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, on behalf of CPIM, I vehemently oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Sir, it is very interesting to note that the Honorable Supreme Court gave its judgment on 11 May, upholding the power of the Delhi government in matters related to Delhi services. And within 7 days, the ordinance was promulgated to override the Supreme Court judgment. Sir, what was the exigency to bring an ordinance in such a hasty manner? According to Article 123(1), the President can promulgate the ordinance only when the circumstances exist which render it necessary for take immediate action. And the Honorable Supreme Court has pointed out several times that power to promulgate ordinance under Article 123 should be exercised with due diligence and caution. Sir, it shows that the BJP government cannot even wait for a single minute to act upon matters which it considers affecting their supremacy. Sir, by interpreting Article 239 AA, the Honorable Supreme Court made it clear that the Delhi government has power to make laws and administer civil services. That's why the Honorable Supreme Court limited the role of the Lieutenant Governor over bureaucrats except to 3 specific areas such as public order, police and land. Sir, the Apex Court made it clear that the Lieutenant Governor role is to either act on the aid and advice of the Council of Ministers or implement their decisions. Sir, Supreme Court recognized that concept of federalism applies to Delhi despite it not being accorded the status of a state. Sir, the bill envisages the sitting of new statutory body, National Capital Civil Services Authority, which consists of 2 bureaucrats, Chief Secretary and Principal Secretary of Home, and the Chief Minister of Delhi. Sir, and as decision made by the authority will be based on majority, the opinion of the Chief Minister, who is an elected representative, can be overruled by the bureaucrats who are supposed to work under him. The irony does not stop there. If differences of opinion prevails, the final decision will be made by the Lieutenant Governor, effectively reversing the verdict of the Honorable Supreme Court. So the object of the bill is nothing but to place the Lieutenant Governor of Delhi as an autocratic ruler above the elected government. Sir, because of a non-BJP government is ruling Delhi, the government is trying to sabotage the spirit of the democracy in Delhi. Sir, this government is finding one or other way to jeopardize the people's mandates in the states. Either they will dissolve the assembly and impose governor's rule as done in Kashmir. So, sir, or they will purchase legislators outrightly as we witnessed in many states like Goa, Karnataka and everywhere when non-BJP government comes to power. Sir, and if that also not possible, comes with a bill of this kind of snatch, the power using bureaucrats.
Sir, and one more practice is there, that of using the enforcement directors, the one and only lifelong Director Sanjay Kumar Misra to threaten the legislators to sit their side. Sir, this government is claiming that Supreme Court judgment has given the power to bring a new legislation, if needed, to control the service of the Delhi administration. Sir, why this government is silent on the Supreme Court remarks against the handling of violence in Manipur? So, sir, even after the Supreme Court indicting that there has been complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, the BJP has no changes chief minister from the post. Why BJP central leaders is silent on Manipur? Sir, it is because they have a clear political agenda in Manipur, which is the agenda of RSS. Sir, we have seen how this government tried to bring BJP to power municipalities in Delhi by merging the 4 municipal corporations to one by bringing a legislation in this house. Sir, then we saw how vehemently the BJP has opposed the election of Delhi mayor as they failed to get majority even after court direction to sabotage people's mandates. Sir, after all, you registered a case against the Honorable CM Kejriwal only because he asked about the degree certificate of PM. So this government is again and again making